Good morning to all the SY students. Welcome back to our next lecture of Candida. We have already started the Candida and we have discussed general morphology, again the infection caused by the Candida, the cultural characteristics of the Candida, that all we have shown in our previous video. So it's time to discuss lab diagnosis, prevention, treatment and control about the Candida. So in this video we will discuss this all the points. Let's have the overlook now. Let's begin. First is lab diagnosis, how you will diagnose that the patient or the person is suffering from the Candida that we are going to see. So the most and the main important lab diagnosis part is the collection of your specimen, how you will collect the specimen, how you will collect the sample, what sample you are going to collect. So the specimen collection is either you can take the tissue infected part or the scrapings or the exudates. Now what are the exudates? Exudate is the mass of the tissue or any part which is infected, any part of the infected tissue or a mass, piece of the mass you can take, that is the exudants. Okay, either you can take tissue or scrapings, means the part or the body part which is infected, you can scrap that. Okay, means what, you can just with the help of some scalpel or with the help of some forceps which has been completely sterilized, you can take the part and transfer to the laboratory for the diagnosis. So once you have collected the sample, you have to analyze that sample. तो आप analyze कैसे करेंगे? Microscopic observation is there. The most important for the Candida, or not only for the Candida I am speaking, for any fungi you can use the 10% KOH. Why 10% KOH? Why not other any chemical? This 10% KOH is useful for the detection of the fungi, especially Candida and dermatophytes, which is your next fungi. Okay, this KOH, it has the ability to specify or to give the, we can say, to detect the fungi. This KOH, it performs the role of the detection of the fungi, especially Candida. So once you have collected your tissue or your scraping, what you will do? You will put up the 10% KOH onto that scraping and visualize under the microscope. Under microscope, what you can see? You can observe the pseudo-hyphae. You can observe the hyphae. Pseudo-hyphae means what? The hyphae is not been matured. That is the pseudo-hyphae. Once the hyphae is been matured, it's simply called the hyphae, and more than one or two hyphae or more than one hyphae is known as the mycelium. So what you can observe under the microscope? You can observe the hyphae, the thread-like filamentous, which will, जो आपको confirmation देता है कि the given person or the given patient is suffering from the infection of the Candida. That's it that you can do, which is very quick and simple method. Next, what you can do, once you have collected the sample, the microscopic observation is been completed. आपका माइक्रोस्कोप के नीचे आपको हाइपी दिखे, तो आप क्या करेंगे? उसे रिकल्चर करेंगे. तो आप कल्चर कहाँ करेंगे? onto the SDA medium, that is sabbrodes dextrose agar. इस मीडियम में आप उसको स्ट्रिक करेंगे. तो आफ्टर इंक्यूबेशन व्हाट यू विल ऑब्जर्व? यू विल ऑब्जर्व द व्हाइटिश एंड स्मूथ कलर कॉलोनीज. इफ दिस कॉलोनीज आर बीन प्रेजेंट ऑन टू द SDA agar, SDA plate, it gives confirmation that the given species, or we can't say species, but the given organism which is present, it is the fungi, the Candida fungi. The species is not been still identified, but genus has been identified that fungi Candida ये present हो सकता है on SDA medium. On chrome agar, you will observe the green color colony. See, the name itself indicate chrome. Chrome stands for the pigmentation, green color pigmentation. It gives you green color colonies which are like smooth colonies, small colonies, but the कलर ऑफ दैट कॉलोनीज आर ग्रीन. ओके, माइक्रोस्कोप के अंडर देखने के बाद आप सेम सैंपल, सेम जो आपने स्क्रैपिंग लिया है वो आप प्लेट एसडी या फिर क्रोम आगार पर स्ट्रिक करेंगे और फिर आपको जब ये सब दिखता है वाइट या ग्रीन कलर कॉलोनीज रिस्पेक्टिव मीडिया में,
आप कंफर्म हो जाते हो कि पेशेंट या पर्सन को कैंडिडा का इन्फेक्शन हुआ है. ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्बिकन्स. इफ आई स्पीक अबाउट द स्पीशीज कैंडिडा अल्बिकन्स, तो उसकी एक अलग यूनिक स्पेशलिटी है, एक अलग यूनिक फीचर है. वो फीचर है जर्म ट्यूब फॉर्मेशन. व्हाट इज द जर्म ट्यूब फॉर्मेशन? नाउ सी what actually happens here when this germ tube is been produced by the Candida albicans species within 2 to 3 hours. Getting my point? Within 2 to 3 hours the germ tube is been produced. Now what happened? कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अब ये जो कैंडिडा के स्पोर से, इट इज़ द स्पोर फॉर्मिंग फंजाई, कैंडिडा के स्पोर से आप उसे ह्यूमन या फिर शिप सीरम पे इनोक्यूलेट कर दीजिए. I'll tell you the experiment, how you can diagnose that. Take 0.5 ml of human or sheep serum in the tube. What you have to do, into the sterile tube, or what that pathologists do, what they do, they take the sterile clean tube. Okay, into that tube they add 0.5 ml of human or sheep serum. सीरम मैंने आपको बताया, हर लेक्चर में मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज द सीरम. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट नाउ. So that serum, into that serum what you have to add, you have by using the pasture pipette. ये एक पिपेट होती है, रबर की पिपेट होती है जो स्टेराइल होती है. ओके, तो उस पिपेट की हेल्प से आपको सिर्फ वो पिपेट स्पोर्स पे टच करनी है, जिस वजह से वो स्पोर्स उस पिपेट में आ जाते हैं, और वो स्पोर्स आपको उस ट्यूब कंटेनिंग 0.5 ml सीरम में ऐड करने हैं. ठीक है, और उसके बाद उसको 2 या 3 घंटे इंक्यूबेशन एट 37 डिग्री सेल्सियस में रख देना है. आफ्टर 2 to 3 hours and incubation time or incubation temperature of 37 degree Celsius, you will see the germ tube formation, not with your naked eyes, under the microscope आपको देखना है. naked eyes में आप, you are studying microbiology, definitely you are not able to see with your naked eyes. वो सैंपल आपको एक स्लाइड में लेकर अंडर माइक्रोस्कोप देखना है, आपको जर्म ट्यूब दिखेगी. सी, यू कैन सी द डायग्राम. स्पोर से, वो स्पोर से ही क्या फॉर्म हुआ है, जर्म ट्यूब फॉर्म हुई है. ऐसे ही लैब में किया जाता है टू डिटेक्ट द जर्म ट्यूब. एंड दिस जर्म ट्यूब, इट इज द मेन विरुलेंस फैक्टर, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द डिसीज ड्यू टू द कैंडिडा. Okay, as it is the part of the candida, it is the structure of the candida, it is the virulence factor of the candida which is responsible to cause the disease. एक बार आपको ये जर्म ट्यूब दिख जाती है अंडर माइक्रोस्कोप, देयर यू कन्फर्म द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द कैंडिडा अल्बिकन स्पेशीज. Okay, and then further the treatment has been given. So it is very unique and peculiar test to diagnose the candida. Next is chlamydospores, जो spores से candida के, that is known as, these are the spores of the fungi. Okay, so these are produced by the candida albicans on corn meal or rice agar when it is incubated at 25 degree Celsius. Now if you will see the biochemical test, glucose and maltose, these two sugar ferment and give as they ferment they produce the acid and gas production. और कौन सी शुगर फर्मेंट नहीं होती है, सुक्रोज एंड लैक्टोज आर नॉट बीन fermented. So these are the biochemical tests which helps you to analyze the, or which helps you to confirm that the patient is suffering from the candida infection. So the diagram has been given, the test tube diagram and the culture of the colonies. See, buttery or creamy like colonies have been developed onto the SDA agar. Serology test. Now fourth involve your serology test which is related to the blood. In this, two mainly used techniques are ELISA and RIA. ELISA stand for enzyme linked immunosorbent assay and RIA stands for radioimmunoassay. They detect the antigen of the candida. They detect the candidal antigen, either cell wall mannan or cytoplasmic constituents. Now what is cell wall mannan? This is the cell wall of the fungi. Actually cell wall of the fungi is known as beta D glucan which is also responsible to cause the infection. पहला क्या है, germ tube virulence factor, दूसरा है खुद cell wall of the fungi which forms the outer covering of the fungi. अब ELISA में क्या होता है,
एलाइजा में आप डिटेक्ट कर सकते, एक्चुअली एलाइजा एंड दिस रिया, दिस बोथ द टेक्निक्स गिव यू अगेन कन्फर्मेशन दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द कैंडिडा। इसमें आप जो एंटीजन है उसी के अगेंस्ट आप एंटीबॉडीज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो एंटीबॉडीज पहले सिर्फ एंटीबॉडीज प्रोवाइड करते हैं और दूसरी बार वो एंटीबॉडीज को एंजाइम लिंक्ड होता है। इफ दैट एंटीजन बाइंड्स टू दैट एंटीबॉडी इट इंडिकेट्स दैट वो एंटीजन, क्योंकि आपने जो एंटीबॉडी प्रोवाइड किया है वो कैंडिडा के ही अगेंस्ट एंटीबॉडी आपने प्रोवाइड किया है, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बाइंड एंड इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस द रिएक्शन, एंड इफ रिएक्शन इज बीन प्रोड्यूस द टेस्ट इज पॉजिटिव एंड द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम दैट इन्फेक्शन। सेम हैपन्स विद द रिया। रिया इज द क्विक एंड द rapid method for the detection of this or for diagnosis of the Candida infection. So here these two techniques are being involved. Next is 1,3-beta-D-glucan assay. As I told you, this is the cell wall of the fungi, which is also the virulence agent or virulence factor of that fungi. Okay. इसका सेकेंड पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे तो इट इज डिटेक्टेड बाय इट्स एबिलिटी टू एक्टिवेट फैक्टर जी ऑफ द हॉर्स शू क्लैप कोगुलेशन कैस्केड, विच इज वेरी न्यू फॉर यू। नाउ व्हाट इज दिस? अब देखिए ये जो जी फैक्टर है, ये हॉर्स शू क्रैप, बिकॉज द शेप ऑफ दैट, इट इज द शेप ऑफ दैट फैक्टर इज लाइक अ हॉर्स शू शेप्ड। ओके, सो इट इज द नेम इज बीन गिवन हॉर्स शू। अब ये क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द प्रोटीन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द फंगल सेल वॉल। गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई वांट टू से? it leads to the formation of the protein which is indirectly involved in the formation of this fungal cell wall. Plus what it does, it coagulate, we can say it is the clotting pathway. It coagulate the clotting pathway. It stop the clotting pathway. It's not important, but just keep in mind that is responsible for the production of the protein that is involved in the formation of the beta-D-glucan fungal cell wall, and it is very sensitive test. Highly specific, ये sensitive है, but results are being quickly found by this beta-D-glucan assay. Next is DNA probe and PCR. These are machinery method we can say. Now DNA probe is nothing but it is the short strand of the DNA. एक single fragment होता है DNA का, आप उसे बोलते हैं probe. Okay, with this probe analysis also you can analyze the infection. Next is PCR. PCR stands for polymerase chain reaction. इसके भी आगे बहुत से steps होते हैं. DNA probe कैसे किया जाता है, ये सिर्फ आपको टेस्ट के नाम में, in syllabus it's not been explained that how you have to identify that. Just keep in mind that probe is the short strand or short fragment of the DNA. PCR stands for polymerase chain reaction. यहाँ पर आपको टेम्परेचर वेरिएशन होता है, तो एक स्टेप में आपको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, एक स्टेप में आपको कम टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है. सो ये सारे स्टेप्स होते हैं. बाय दिस मेथड यू कैन आइडेंटिफाई एक्चुअली, and this PCR is not only used for this Candida, it's used for many techniques. It's used for identification of different techniques. Okay, so these 6 methods are used for the lab diagnosis. Now next comes here your treatment. See, ट्रीटमेंट हर एक, अभी हमने जैसे टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन में देखा, ओरल कैंडिडियासिस है, क्यूटेनियस है, सिस्टेमिक है, ब्लड इन्फेक्शन है, तो इन सब के लिए ट्रीटमेंट और मेडिकुलेशन अलग अलग दिया जाता है. ओरल कैंडिडियासिस, ये जो नाम है राइट साइड में, नियास्टिटिन, माइकोनाजोल, एम्फोटेरिसिन बी, ये सब एंटीबायोटिक्स के नाम है. ओके, और इन सभी एंटीबायोटिक्स का फंक्शन एक ही, टू इनहिबिट दी फंगल इन्फेक्शन. जिस वजह से फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, एक बार आपको डायग्नोस हो गया कि ये इन्फेक्शन इस वजह से हो रहा है, सेल वॉल के वजह से हो रहा है, तो डायरेक्टली ऐसी ड्रग दी जाएगी जो सेल वॉल को इनहिबिट करे. ओके, अगर ऐसा लग रहा है कि जर्म ट्यूब के वजह से हो रहा है, तो ऐसी ड्रग दी जाएगी कि जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन इनहिबिट हो. अगर ऐसा लग रहा है स्पोर्स के वजह से हो रहा है, तो ऐसी ड्रग दी जाएगी कि स्पोर्स का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाए. गेटिंग माई पॉइंट? मीन्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इन्फेक्शन जो आपको इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट दी जाती है. ओरल कैंडिडियासिस के लिए नाइस्टेटिन है, माइकोनाजोल है, एम्फोटेरिसिन बी है.
oral which is related to the mouth, cutaneous which is related to the skin, in any part of the skin. This all are the names of the drugs. Not necessary कि आप हर ड्रग का नाम याद रखिए, एटलीस्ट आप 2 ड्रग का नाम याद रख सकते हैं. ओरल के लिए 2, क्यूटेनियस के लिए 2, सिस्टमिक के लिए 2. ये जो फ्लूकैनाजोल है, इट इज़ वेरी कॉमनली यूज फॉर द फंगल इन्फेक्शन. नॉट ओनली कैंडिडा बट अदर फंगल इन्फेक्शन ऑल्सो फ्लूकैनाजोल इज यूज. एक्चुअली इट इज़ द क्लास ऑफ द एंटी फंगल ड्रग. ओके, फ्लूकैनाजोल. देन कैंडिडेमिया, सी एंटी फंजिन फ्लूकैनाजोल, ये आपको हर जगह पर दिखेगा. सो ये कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक है. अब आप क्या प्रिवेंशन लेंगे टू कंट्रोल? ट्रीटमेंट बाद में दी जाती है, जब इन्फेक्शन हो जाता है तब मेडिकुलेशन ट्रीटमेंट दी जाती है. लेकिन डिसीज ना हो तो आप प्रिवेंशन क्या ले सकते हैं? इट्स सेड दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो यू हैव टू टेक फर्स्ट प्रिवेंशन. सो येस, इट्स वेरी कॉमन दिस प्रिवेंशन. आप हर जगह कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन कीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, ठीक है. और इस मामले में एक रेयर नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन एक अलग जो प्रिवेंशन है कि फंगल इन्फेक्शन एक्चुअली जब वेट कंडीशन हो तब होता है, सब ऐसा गिला गिला हो तब होता है. तो आप ट्राई कीजिए कि वेट कंडीशंस ये ना हो. ओके, ट्राई टू बी इन द ड्राई कंडीशंस. इफ़ यू आर थिंकिंग दैट इट मे कॉज मी अ फंगल इन्फेक्शन, या फिर कोई पैचेस मुझे हो जाएगा नेल्स के साइड में या फिर फुट के साइड में, पैर के साइड में, तो आप ऐसी जगह अवॉइड कीजिए कि जहाँ पानी ना हो. दैट यू कैन टेक. ओके, फंगल इन्फेक्शन मोस्टली पानी में ज़्यादा देर रहने की वजह से या फिर यूज़ ऑफ वाटर फॉर मेनी, मतलब ज़्यादा पानी का यूज़ करने की वजह से आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है. तो ट्राई टू बी इन अ वेट condition, or if you try to be in a dry condition. If you are thinking that I am getting wet or the wet clothes can cause the infection to me, you can change it, so that somewhat different prevention you can take. So now here we have completed our candida, in candida, what you can say, candida fungus. In next video we will see other fungus, that is dermatophytes. Okay, so yes, thank you.